जब जल जीरा मसाला Sip, sip, jeera sip, MBH का जलजीरा जीरा sip, MBH का जलजीरा जीरा sip. From the Republic Media Network headquarters, it's time for Arnab Goswami on the debate. Arnab Goswami on the debate. On the show tonight, Pakistan betrays Iran. Now it's in a complete fix. At 9 p.m. tonight, what is the US really up to? Has Trump acknowledged a forthcoming regime change in Iran? And ladies and gentlemen, before I bring you a report on the latest situation, as far as Iran versus Israel and Iran versus the United States of America is concerned, let's pause a while to think about the mess in the room. Yes, Pakistan, as usual, it has landed itself in an impossible mess, in an unwanted situation that it has created for itself. First, Pakistan said that we want a Nobel Peace Prize for Trump. Asim Munir got so excited that he was being called to the White House that they said that we're so grateful to the Americans that they stopped India's bombing of our military bases that we want Trump to get a Nobel Prize. Now, 24 hours later, the entire center of gravity of Pakistan's argument has changed because now it says it's become anti-America. It is gravely concerned at the risk of a possible escalation of tensions with West Asia. Within 24 hours, Pakistan went from wanting to nominate Trump for a Nobel Peace Prize to saying that the US strikes on Iran are a violation of international law. For 24 hours, this country is so confused, it's such a mad country, that it says Trump is a great and genuine peacemaker, and then they said he's a terrible, terrible aggressor. First they said Trump has shown great strategic foresight and stellar statesmanship, and then they said that America does not adhere to international law. The biggest fool in this is a man called Asim Munir. He either cracked a deal with Trump or he deceived him. My own understanding of the situation is that Asim Munir was told by Trump to give America access to its air bases. Now they are trying to sort of make amends and say that their air force is not involved in bombing Iran. This means that America used Munir as a diversionary tactic and kept them as a backup option. That is what Pakistan has become. It's become a backup option for the world. Worse, there is internal turmoil in Pakistan. There's a section of hardline Muslim leaders who feel that Pakistan has let down an Islamic country. Maulana Fazlur Rahman is questioning Asim Munir and saying that the proposal for a Nobel Prize for Trump that has been proposed by Pakistan should be withdrawn. Well, Asim Munir is being taken too seriously by Fazlur Rahman. I don't think the Nobel Prize Committee gives a damn about a fool called Asim Munir. But the fact is that Imran Khan says it is unmitigated shame for Pakistan that it has supported America against Iran. Reality is Imran Khan should also know that nobody takes Pakistan seriously. But this is the kind of khichdi that the Pakistanis have landed themselves in the middle of. They're neither here nor there. They are with nobody. They're somewhere in between. They don't know where to go. Ladies and gentlemen, the most confusing country in the world, the most confused country in the world as of now is neither Israel nor Iran. It is Pakistan. Here's a report on where the war stands as of tonight. They thought he was a quote-unquote friend. Until he wasn't anymore. The serenading of Munir at the White House made Pakistan swoon.
until it all came undone. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Not the first time Pakistan is realizing that there are no free lunches in the White House. Nor the first time Pakistan has been taken for a ride by the geopolitics of the United States in the region. Pakistan's government is grappling with a diplomatic crisis. The same government that nominated US President Donald Trump for the Nobel Peace Prize, citing his decisive diplomatic intervention in diffusing recent India-Pakistan tensions, has now been compelled to reconsider its decision. And why? Because US government led by Trump launched a targeted strike, flattening 3 of Iran's critical nuclear sites. Iran, a country that has long stood as an ally to Pakistan among other Islamic nations. The nomination, formalized by Foreign Minister Ishaq Dar in a letter to the Nobel Committee, followed a meeting between the Pakistani Army Chief and the US President. But in less than 48 hours, the tone shifted dramatically. Islamabad says US action against Tehran is blatant violation of international law. अमेरिका इस्राइल मुसलमानों के कातिल हैं. Pakistani MPs are holding placards in support of Iran. इस्राइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद. A terror-sponsored nation is split between appeasing the US and standing with the long-term ally, Iran. Time and again, Pakistan has always chosen the side of terror. Trump's decision to enter the West Asia conflict has put Pakistan yet again in a tight spot, triggering a massive internal fight within Pakistan. Okay, let's get General Raj Shukla in, let's get General G.D. Bakshi in and Sushant Sareen in. Opening with you, Sushant, what do you think this is happening as far as Pakistan is concerned? They wanted a Nobel Prize for Trump, then they justified their folly by saying that he's a great, genuine peacemaker. Now there's all hell is broken loose in Pakistan, and they are now condemning America, saying it's a very bad violator of international norms. What's going on there, Sushant? I don't know why you are sounding so surprised by what the Pakistanis are doing. They've always done this. Listen, it's a mercenary nation. The reason for the creation of Pakistan was to play these kind of games. And I think unlike us, who attribute a lot of, a lot of Machiavellian intent to the Pakistanis, I think the Afghans have got a better measure of the Pakistanis. And the former Afghan ambassador in Islamabad, Abdul Salam Zaif, described them the best. He said Pakistanis have 2 tongues in 1 mouth, so they will speak different things to different people. They have 2 faces on 1 head. They deceive everybody. They will, with the Arabs, they will behave that they are Muslims. With the rest of the West, they will behave that they are far more westernized and modern, and the Arabs and everybody else is, something that the cat brought in. They play these double games. They've always done it. Now, the problem for them is that these days, these things don't get hidden for very long. So they went ahead and they started apple polishing Donald Trump, pleading to his ego, massaging his ego, nominating him for the Nobel Peace Prize. And the next day, the guy goes around, and they also boasted that Donald Trump had delayed the bombing of Iran because Asim Munir went and convinced him to do it. Okay?
That was the narrative they built up. The next day, Donald Trump goes and bombs Iran. Now they have nothing but shit on their faces, right? What do? So now they will try and play that other game that no, we are condemning the United States, but we asked for Nobel Peace Prize for Trump because he got us peace and he saved us from Modi. That is the line they are trying to toe. I don't think anybody is really fooled by it. And Trump himself said that Asim Munir had agreed with me on Iran when we met. Didn't he say that? It's there on record. Now, Asim Munir agrees with Trump, and Asim Munir then reaches out to the Iranians. And the reason for that is that the Pakistani state wants to suck up to the Americans, to the West, so that they can get money. And the Pakistani street is Islamized beyond, redemption. And the Pakistani street wants to take on the West, wants to take on America. It considers, like many other Islamic societies, it considers America as the great Satan. So they want to take on America. The army doesn't have the wherewithal to do any such thing. It does not have the guts or the gumption to take on the United States. Again, United States, it does not have the guts and the gumption to take on Israel. They're terrified of Israel. Don't go after their boasting. They're terrified. So what do? So they play the double games, which is what they are doing. But the public mood and the public sentiment and the sentiment of the state are clashing with each other. And the imperatives of the state and the public sentiment are continuing to clash with each other. And that is why they'll try and walk this tightrope. Nothing more than that. I don't think you should attribute some great conspiracy theory. It's low-level cunning that the Pakistanis are displaying. Something which they have done ever since they've come into existence. Nothing new. Some kind of a statement right now. I mean, this is breaking news. Abhishek will be joining us in 2 minutes. The Pakistanis have just gone completely mad and confused. And they've come out with a press statement in which they're saying attacks are very bad, but we will not mention America. The attacks are very bad, but we will not mention America. We will mention Israel. We will blame Israel for America's attacks. This is a mad situation. The bombing has been done by America. General Bakshi, it's a serious situation. The bombing was done by these B-2 stealth bombers. Pictures on the screen, please. These are American bombers. But they're saying that it's very bad of Israel to bomb Fordo. But the bombing was not done by Israel. It was done by America. General Shukla, this statement has come from Shehbaz Sharif's office 5 minutes back. Now, why do they need to get their finger into this? Why are they getting into this? It's got nothing to do with them. Have they got a exaggerated sense of self-importance? What is Pakistan really doing? What do they want, General Shukla? What do they want? So I really don't know, Arnab. I wonder whether they have a foreign office and do they have a foreign service with these kind of statements. This is kindergarten stuff. Secondly, when Asim Munir was there, the day he had lunch with President Trump, by then much of the world knew that the American attack on Fordo was imminent. I happened to be in the United States in the same time, and Washington was abuzz with the very real possibility of Trump going ahead with the B-2 strike and Fordo. So if Asim Munir, despite knowing this, went for lunch, what does it speak of Pakistani statecraft and foreign policy? It reflects very poorly on them. So that's all I can say, and therefore, they certainly in these matters, they don't need to be taken seriously. One day you nominate him for the Trump Prize, for the Nobel Prize, as Sushant was saying. As if your recommendations, carries weight, were so meaningful that you nominate Trump and he gets the Nobel Prize. And President Trump himself, I heard one of his statements, he said that I'm not going to get the Nobel Prize. These liberal guys are not going to give it to me. So what was Pakistan doing? This is all juvenile stuff, kindergarten stuff. It reflects very poorly. But they got a border. They got a border with Iran. They've got a border with Iran. They got a border with China.
They got a border with Afghanistan. So these things are not in isolation. The best thing is they've isolated themselves within their neighborhood and in the Muslim world. See, the rest of the Muslim world also, General Shukla, is being a little hands-off, but it's not taking a stand. Asim Munir met Trump a day before the bombing, so they have taken a stand. Absolutely. So when he went to have that lunch, yes, the speculation was that, Trump was courting Pakistan to, for basing, or if there were some ejection contingencies, airspace, so on and so forth. Now, if Asim Munir was part of that lunch and kind of agreed to all this, then what is this condemnation of Iran? There is no consistency in their foreign policy unless their external outlook has no measure of what is happening domestically. If there is going to be such a storm domestically, why go and have lunch? So, it just doesn't make any sense. And I don't expect Asim Munir, he's not that high quality general to have any sense of foreign policy. But where is the foreign office? Where is the foreign service of Pakistan? Do they have nobody to advise? No, nobody. Nobody. They've gone mad. I said they either, I think Americans made a fool of Asim Munir, but Abhishek has some breaking news. Abhishek Kapoor. Abhishek. Well, yes or no. So there was a National Security Committee meeting of Pakistan, which concluded just a while back, and there is a statement coming in from the Pakistani Prime Minister's office. And my takeaway was that while it condemns the attacks, it fails to mention the United States and puts the entire onus on Israel. Obviously, what do you mean they put the onus on Israel? Pakistan does not have the courage to name names. And after having nominated Donald Trump for the Nobel Peace Prize just 24 hours before the American strikes, and just 4 days after Asim Munir having that lunch in the White House, I think Pakistan is realizing there is nothing called free lunch with Donald Trump. And so they are realizing. Another important takeaway, Arnab, I must mention is that while this is the right platform where Asim Munir should have briefed the Pakistani government about the deliberations that he had behind closed doors in the White House, the statement says that Asim Munir would brief Pakistani Prime Minister later about what happened in the meeting in the White House between him and President Trump. So I think my takeaway is Pakistan does not realize that there is nothing called free lunch, and it continues to maintain very double standards, duplicity. But will they take back the recommendation? Not that they have any weight. Not that even the guard in the office of the Nobel Prize office would bother about Pakistan. Nobody gives a damn about Pakistan. But now they're in a fix. I like that. Now, General Bakshi, I like that. They're fighting now. Rauf Hassan, head of the PTI's political think tank, says, Asim Munir has caused us unmitigated shame and embarrassment. Rauf Hassan says, that is why it is said legitimacy can neither be bought nor gifted. Jamaat-e-Islami chief Naimur Rahman says it is most embarrassing to announce the nomination for Donald Trump hours before he bombed Iran's nuclear sites. Malia Lodi says the decision to offer a Nobel Prize to Donald Trump by Pakistan is quote-unquote unfortunate. Unfortunate. These are the kind of reactions coming in. Arnab, in the simple Queen's English, there are statements, too smart for his own good, too clever by half. These fit Pakistan to a T. Too smart for their own good, too damn clever by half, in a manner that is ridiculous. They have made asses of themselves in front of the whole world. You know what Mullah Munir is being called on Pakistani social media channels? What's that? Mir Jafar. Mir Jafar, yeah. Mir Jafar. Yeah. And we all know Mullah Munir Jafar. And we all know what that means. Mullah Asim Munir. The Americans were initially impressed. Here is a Pakistani general, one-way window of doing business with Pakistan, and who also is, an Islamist general, popular Islamist general like Ziaul Haq. Here was the general who gave that monumentally stupid speech on, in the trying to describe South Asia in the terms of Samuel Huntington. Clash between the Hindu and the Muslim civilization. We are different.
You know, that is Different, the way he yeah. pronounced that stupid word. We are so different, Hindu and Muslims. You remember that, Arnab? Yeah. And that was followed a week later by his minions doing the Pahalgam, communal massacre. Pahalgam communal massacre. This man told the world that Pakistan is Riyasat-e Madina 2.0. Pakistan will teach Saudi Arabia and the Gulf Emirates how to practice Islam. They are obviously straying from the murder and mayhem and the qatl and the bloodshed, etc., that he sees as the prime feature of Islam. This man had ambitions, Arnab, of being the Khalif of the Muslim world. This man actually has ambitions. He wanted to be a field marshal. That is the next step to becoming the president, the Sadr of Pakistan, and then on to being the Caliphate, the Khalifa of the Muslim world. Edge out Erdogan, edge out the rest. And here comes the greatest mullah of them all, who's just been caught with his pants down, sucking up to Donald Trump a day before he hit Iran. And the Pakistanis, look at the duplicity, Arnab, running with the hare, hunting with the hound. We've heard that term many, many times before. But look at the duplicity. Some Pakistani politicians spoke to the Iranian Revolutionary Guard generals and they assured them that should Israel use a nuclear bomb against you, we have the Islamic bomb. We will bomb Israel. Next day, they wet their trousers. They wet their trousers and there were denials galore from Pakistan. We never said anything. We never assured anybody of this kind of a thing. That just shows the metal this idiotic country is made of. They are too smart. They are too opportunistic. They are too clever by half. And they tie themselves in. But they backstabbed Iran. What they backstabbed Iran? United States of America and sheltering Osama bin Laden. But the point 800 meters from the Pakistan. Yeah, but that time they backstabbed America. Now they backstabbed Iran. General Shukla, they backstabbed Iran. The first person who Ayatollah Khamenei met after Operation Sindoor, the first leader Shehbaz Sharif met was Ayatollah Khamenei. And then Shehbaz Sharif, what did he say to Ayatollah Khamenei? He said, we are a Muslim country, you're a Muslim country, all Muslim countries must stand together. And if the Islamic Ummah is to be secure, then there must be unity of all the Muslim nations. What happened to the Muslim angle here? Muslim angle went out of the window this time. So Iran is going to be permanently upset with Pakistan. What's the opportunity for us there? Before that, Arnab, look at the state of civil society and the political class in Pakistan. I'm told when Asim Munir met President Trump, the guys who were called in were Asim Munir and the DG ISI. There was a minister accompanying them. I think it was Khwaja Asif. He was not even called in. So the onus is equally on the civil society and political class that you are not even called in and you accept it. And the other issue is, which really surprises me, what are the professional attributes of Asim Munir? The greatest thing I've heard about him is that he's a Hafiz, somebody who's memorized the Quran or something. Can these be attributes to make a chap chief of army staff or a field marshal? And therefore all his actions and his deeds are really, reflecting what he actually is. A shallow person, not even a good soldier, and all these contradictions in the Pakistani civil society and their political class. As far as their assurances to Iran are concerned, what does Pakistan have to offer Iran? What would they have done? I don't understand. They have nothing to offer. They have no cards on the table, except for these monkey tricks, if I may so describe, the activities of the field marshal and those around him. Yeah, they're a country that just want to sell themselves very quickly. I thank you very much, Al Bakshi and General Raj Shukla. And I have from Pakistan, Abdul Samad Yaqub. Oh, great to have him after a long time tonight. He's leader of the PTI, Imran Khan's party. And we have Irshad Ahmad Khan, PMLN leader from Islamabad. Now, Abdul Samad Yaqub, my question to you is simple.
can Pakistan take its nomination for a Nobel Peace Prize for Donald Trump back? Can they take the nomination back? Because it's an official nomination. Official nomination for Nobel Peace Prize. What do you expect from the sycophants regime who is in hurriedly? I mean, they have gone and nominated Mr. Trump for the Nobel Prize. I don't think they can ever dare to take it back, although they are facing so much criticism in Pakistan. There's a great backlash, but they won't dare to take it back. This is very clear. I mean, from my side, I mean, I believe that no, not at all. Not at all. I mean, they were looking for the meeting, they had a lunch, and they will keep it. But kuch soch samajh ke to kiya hoga na. When they met, you see the thing, what is happening, what is attracting attention, Abdul Samad Saab, is that they, when Asim Munir met Donald Trump, it was to discuss Iran. And he gave a commitment. But what is the need to nominate Trump for a Nobel Peace Prize? बाहर आके फिर प्रेस रिलीज कर दी और उसके 12 घंटे के अंदर Trump has bombed Iran and got directly involved. Abhi, what I'm told, I'm seeing that a comment of Maulana Fazlur Rahman. He said President Trump's claim of peace has proven to be false. His proposal for the Nobel Prize should be withdrawn. Even Pakistan's former ambassador to the US, Malia Lodi, says it is most embarrassing, it is unfortunate. Jamaat-e-Islami chief Naeemur Rahman bhi keh rahe, it is most embarrassing to announce the nomination hours before Trump ordered to bomb Iranian nuclear sites. Even from your party, Rauf Hassan has said it is a matter of unmitigated shame and embarrassment. Now, yeah. हुसैन हक्कानी साहब ने भी इसको जो है बड़ा एक्सप्लेन करके बताया कि ये शायद बगैर सोचे समझे सफारतकारी में और चापलूसी में खुशामद में फ़र्क होता है और ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ हुसैन हक्कानी ने भी जो कि फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में वाशिंगटन में उन्होंने भी ये बात कही और जो कि लेफ्टिस्ट समझे जाते हैं जो कि पीपल्स पार्टी के थे पीपल्स पार्टी ने उन्होंने वो किया तो जब हुसैन हक्कानी साहब जो अमेरिका में बैठे हैं वो कहें कि सफारतकारी यानी डिप्लोमेसी में और ये चापलूसी और खुशामद में फ़र्क रखना चाहिए इन्होंने बगैर सोचे समझे जो है ये गए और बिल्कुल ही वो सजदारेज़ हो गए But Yaqub Saab, see, I'm asking you this because you have a prime minister whose name is Shehbaz Sharif. And as we just knew, there was a minister also, when he went in, he was told to be outside the room when Trump met Asim Munir. And then Asim Munir went inside the room and told Trump that he agrees with Trump's policy on Iran. Now, my question to you is, can he say that? Because Trump ne kaha ki Asim Munir agrees with us on Iran. Did your government give him that freedom to make that commitment that Pakistan is with America on Iran? Was that? Well, Pakistan's declarative policy towards Iran is to appease, in fact, to appease the Shia population in Pakistan. But in reality, the real policy of the Pakistan is based on hypocrisy. I mean, it is believed that Iran is always a pro-Iran, Iran is always a pro-India, and I don't think that we ever had a very good relationship or a warm relationship with Iran because we, like over deep state, always support Jandullah, who is fighting against Iran in Sistan. So the real policy is reciprocal to Iran's real policy towards Pakistan. I mean, Iran is consistently supporting the insurgents of the Balochistan. So I don't think that Asim Munir has said something new. I mean, we internally we have another policy and explicitly we. But it was the last meeting. Policy. No, it is the last meeting Trump had with any foreign guest before bombing Iran.
which means it was a last meeting. It was a last meeting, and it is believed that somewhere Pakistan was agreed, and someone also claimed that some sources also claim that Pakistan airbase is used against Iran. Yeah. So has Pakistan airbase been used? This is also being spoken not airbase, about. but the airspace. Airspace has been used. Yeah, it is. Some sources claim that, but I'm not sure whether it is used or not. But the fact of the matter is, I don't think that Pakistan will resist or Pakistan will somehow, cooperate or assist Iran. I mean, definitely, it's over. So what should the government do about its proposal to nominate Trump for a Nobel Peace Prize? इससे आपको कैसा लग रहा है? ये क्या खुशी की बात है आपके लिए? नहीं, ये तो देखें, ये गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है, ये पिंडी का डिसीजन है. ये अगर गवर्नमेंट का डिसीजन मतलब क्या है पिंडी के डिसीजन का मतलब क्या? आप क्या मानते हैं? मतलब मैं पिंडी के डिसीजन का मतलब ये है कि आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का डिसीजन था और इन्होंने बहुत ही जल्दी में जो है वो फैसला किया कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो पिंडी की तरफ से आने वाले इंस्ट्रक्शंस को रेजिस्ट कर सके या उस पर उनकी कोई सेकंड थॉट हो या कोई ओपिनियन हो उसके ऊपर. वो तो लंबे लेट जाएंगे जब इस तरह की कोई बात होगी तो ऑब्वियसली. व्हाट डू यू मीन लंबे लेट जाएंगे? व्हाट डज दैट मीन? आई मीन ऑब्वियसली मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं? मेरे लिए फिर और मुश्किल हो जाएगी. आप तो प्रोग्राम करके घर चले जाएंगे. नहीं, मैं कोई मुश्किल क्या मुश्किल होगी? आपको पिछली बार तो उठाया था ISI ने मेरे प्रोग्राम में आने के बाद. खैर छोड़े इन बातों को. नहीं, वो कोई बात नहीं है, आप खुलकर बोलिए. देखिए इरशाद अहमद जी, ये जो आप लोगों ने किया तो ये अब्दुल समाद जी बोल रहे हैं कि पिंडी का डिसीजन है, यानी कि आर्मी का डिसीजन है, इसमें सिविलियन गवर्नमेंट की कोई हाथ नहीं है, आपकी पार्टी की कोई हाथ नहीं है. तो आपने ऐसा क्यों किया? इतनी जल्दबाजी क्यों की जो अभी पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी इसको क्रिटिसाइज कर रही है? खुलकर. बहुत शुक्रिया आरब. मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, ये अब्दुल समद याकूब साहब उस पार्टी से हैं जिनकी सोच छोटी है, बहुत घटिया सोच है. ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते आ रहे हैं और उसका खमियाजा इनका लीडर भुगत रहा है. वो जेल में पड़ा, ये जुबान हिलाते हैं और उसको बर्बाद करते हैं क्योंकि ये लोग एंजॉय कर रहे हैं दुनिया को, पाकिस्तान में हर चीज को. लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही है ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या करें. दूसरी बात यह है, नोबल इनाम की बात करते हैं आप, नोबल की बात करते हैं आप, तो वो किस वक्त की गई? आप ये देखिए, ये उस वक्त का अनाउंसमेंट है जब उन्होंने जो कुछ आप लोग, आपकी हुकूमत, मोदी जी और आपके अमित शाह चाहते थे कि लाखों करोड़ों लोग मर जाए, उसको बचाने में वाकई उनका हाथ था ट्रंप जी का. उन्होंने वाकई वो कुछ कर दिखाया जो कुछ आप करना चाहते थे इंसानियत के खिलाफ, इंसानों के खिलाफ, इंसानों को मरवाना चाहते थे, उसने बचाया. और भला मैं आपको बता दूं, एक मिनट इरशाद जी जरा एक मिनट सवाल कर रहा हूं आपसे. देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने पहले ही आपको कहा था. आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग. देखिए मैंने आपको कहा था ऑपरेशन सिंदूर के पहले कि हम आपको मारेंगे, जरूर मारेंगे, अच्छी तरह से मारेंगे. आप रोएंगे और आप रोते रोते दुनिया के सामने जाएंगे कि और मत मारो. और जो मैंने कहा वही हुआ. हमने आपको मारा, बहुत मारा, 6 तारीख से 10 तारीख तक मारा. रोते रोते आप गए अमेरिकन के पास, मगर खुलकर जो मान रहे हैं आप आज, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप. देखिए याकूब जी, देखिए खुलकर ये मान रहे हैं, ये भी बड़ी बात होती है कि भारत ने हमको इतना मारा. मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए. उसके बाद आप कह रहे हैं खुलकर भारतीय टेलीविजन पर आके कह रहे हैं हमें बहुत मारा और ट्रंप ने हमें बचाया, नहीं तो हम मर जाते. आपने कहा हमने मारा, उन्होंने बचाया. ये कहा बचाया, आपने कहा बचाया, आपने कहा ट्रंप ने हमें बचाया और इतना बचाया. उसके लिए हम इतने ग्रेटफुल है उनको, इतने ग्रेटफुल है कि जूते चाटते हमको कहेंगे कि आपको नोबेल प्राइज देंगे. मगर हर चापलूसी की भी हद होती है, एक सेल्फ एस्टीम जैसी कोई चीज होती है. इतने बड़े चापलूस है आसिम मुनीर कि खुलकर अमेरिका में जाके कहते हैं मैं नोबेल प्राइज दूंगा. अब सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि चापलूसी कीजिए, चापलूसी. सुनिए याकूब साहब, इरशाद साहब एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए. देखिए बिल्कुल बोलने दूंगा, मगर एक बात कहूंगा जो उसके बाद आपको बोलने दूंगा. देखिए कोई 2 मिनट सुनिए मेरी बात. देखिए चापलूसी करना बुरी बात नहीं है. कई लोग कई कारणों से चापलूसी करते हैं.
कभी अपनी विवशता के कारण यानी कंपल्शन के कारण करते हैं, कभी अपनी चॉइस के कारण करते हैं। किसी को प्रमोशन चाहिए, नौकरी में चापलूसी करता है, किसी में कोई एबिलिटी नहीं है, बेकार सा इंसान है, खुद की कोई हैसियत नहीं है तो चापलूसी करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मगर आप एक अभी आपको पूरे दुनिया में आपकी इमेज हो गई है, आप चापलूस देश हैं। ये गलत नहीं, याकूब साहब कुछ याकूब साहब कुछ कह रहे हैं आपको। याकूब साहब बोलिए ऑन द वर्सेस। याकूब साहब गीदड़ की तरह आपको भुगाया। याकूब साहब इज स्पीकिंग राइट नाउ। याकूब साहब वॉल्यूम लाउडर। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप इतनी चापलूसी करते हैं और 5 साल से कर रहे हैं, क्या मिला आपको? क्या मिला आज तक पीएमएलए ने क्या दिया आपको? मतलब कोई रीजन होती है, कोई रिवार्ड होता है, कोई वजह होती है। देखें हम लालची लोग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ, बहुत मकाम है कि मैं आज बैठा हूँ अर्नब के साथ बात कर रहा हूँ, आपकी आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा हूँ और आपका दिखा रहा हूँ, आपकी खसूसियत दिखा रहा हूँ पीटीआई वालों की औकात दिखा रहा हूँ बैठकर इंटरनेशनल चैनल पर। ये अल्लाह ताला ने दिया। ऑडियो कंट्रोल वन एट अ टाइम। मुझे फख्र है अपने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब पे, मुझे फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, मुझे फख्र है कि हिंदुस्तान को शिकस्त देने पर, मुझे फख्र है ईरान के साथ खड़ा होने पर। मगर जो आप आज देखिए आप मुझे आई टेल यू वन थिंग, मेरी बात सुनिए इरशाद जी, एक मिनट इरशाद जी देखिए, भारत में मेरी बात सुनिए जरा, मेरे ऊपर मत बोलिए, हम तीनों बात करेंगे आराम से, शालीनता से, ठहराव से बात करेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर ना बोले, मैं आपको बोलने दूंगा। देखिए भारत में मैं अगर बोलूं कि मैं अर्नब गोस्वामी भारत के सबसे बड़े नेटवर्क रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का एडिटर चीफ कहता हूं कि मैं इजराइल का समर्थन करता हूं और हर भारतीय को इजराइल का समर्थन करना चाहिए, तो मैं बाहर जाऊं ना, स्टूडियो के बाहर लोग मेरी वाहवाही कहेंगे कि बिल्कुल आपने हमारी दिल की बात कह दी, ठीक है ना। ये हमारी पोजिशन है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, अभी कुछ भी हो, और कंसिस्टेंट है, बदलते नहीं रहते। अभी आप अगर अपने जहां पे घर के बाहर जाके बोलिए, जो असलियत है मानना पड़ेगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, दिखाने के हाथ आपके थे ईरान के साथ, मुस्लिम दुनिया के साथ, मगर सच्चाई आज ये है याकूब साहब कि आप एकमात्र अकेले आप एक ही मुस्लिम देश है जो 100% इजराइल के साथ खड़ा है। अच्छी बात है क्योंकि आप ट्रंप और इजराइल के साथ, आप नहीं कह सकते हम ट्रंप के साथ है इजराइल के साथ नहीं है, आप इजराइल के साथ है, आप इजराइल के साथ है क्योंकि आसिम मुनीर ने वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में जाकर कहा करो आक्रमण इजराइल पर, सारे एयर बेसेस मेरे तुम्हारे लिए है, सारी फैसिलिटीज मेरी है, मेरी एयरफोर्स, मेरी एयर स्पेस आपकी है, और आपने इजराइल के साथ खड़े हो गए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बुरी क्या है? आप इजराइल ट्रंप के साथ है मतलब इजराइल के साथ है, आप ट्रंप के साथ है तो इजराइल के साथ है। याकूब साहब मैं कुछ गलत कह रहा हूं? ट्रंप नहीं, देखिए इसमें घुमा फिरा कर बात नहीं करते, आप इजराइल के साथ, यू आर विथ इजराइल सर। हम मुसलमानों के साथ हैं, सोच ही हो कि मरने के लिए पैदा हुआ वो किसी से नहीं डरता है। डोंट गिव मी शायरी। ईरान अल्हम्दुलिल्लाह आपको 10 मुहर्रम से पहले बताएगा, औकात दिखाएगा उन यहूदियों को, उन जालिमों को जिन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, उन जालिमों पे जिन्होंने फलस्तीन पे जुल्म किया, उन जालिमों पे जिन्होंने ईरानियों को मारा। आज देखिए कितना वो जज्बे के साथ लड़ रहे हैं। फलस्तीन के साथ, फलस्तीन की तरह इनको भी बना देंगे बेचारों को मजलूम। वो मजलूम नहीं है, वो ईरान है। मगर आसिफ मुनीर इरशाद, उन्होंने शहादत हासिल की है, शहादत का बदला लेंगे इंशाल्लाह। इरशाद जी आप लॉजिकली समझिए कि आपके आर्मी चीफ वॉशिंगटन गए और आपके आर्मी चीफ ने ट्रंप को कहा 3 चीजें। पहली बात कही थैंक यू वेरी मच इंडिया से बचाया, दूसरी बात कही आप ईरान पर हमला करें, मेरी एयर स्पेस आपके लिए, मेरे एयरबेस आपके लिए, और एयर स्पेस आपकी यूज हुई है। यानी कि तीसरी बात आप इजराइल के साथ खड़े हो गए, आप एकमात्र मुस्लिम देश है, ठीक है। और चौथी बात उन्होंने कही कि मैं इतना बड़ा चापलूस हूं आपका, आई एम सच अ बिग साइकोफैंट ऑफ योर्स,
कि मैं आपको ऑफिशियली नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करूंगा। ये रियलिटी है। डू यू अंडरस्टैंड? रियलिटी ये है, इट्स अ रियलिटी। आप लोग सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया देख रही है कि हम कहाँ खड़े हैं और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। आप ये देखिए कि इतना अजीम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब को इतना प्रोटोकॉल दिया गया आपके इंडिया के। वन मिनट आप, आई विल गेट द ख्वाजा आसिफ बाइट। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम दुनिया की गंदी काम करते हैं, दुनिया के लिए डर्टी जॉब करते हैं। हम एक डर्टी कंट्री है और हम डर्टी जॉब करते हैं दुनिया के लिए। ये मैंने नहीं कहा बीच में। Put it on the screen. Let's show this Pakistani what he said. Play Khwaja Asif's bite. For United States for about 3 decades, and West, including Britain, and we suffered for that. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain, and we suffered for that. Okay, now you've heard that. Abdul Samad, it's a very difficult situation today for this Irshad, he's attacking you personally, but the mool mudda is what? Mool mudda is that in the eyes of the Pakistani people, the Shehbaz Sharif government has chosen to be with Trump and Israel. Now, is there any two views on that? After officially nominating Trump for a Nobel Peace Prize and allowing your country's airspace to be used in strikes against Iran, is there any doubt that you're with Trump and Israel? Even yesterday, Iranian ambassador to Pakistan, who has spoken to the media and he did a press conference, asked Dr. Saab, what did he say? He criticized categorically the nomination of the Nobel Prize. So how can Dr. Saab justify it? Dr. Saab, ईरान का एम्बेसडर इस्लामाबाद में बैठ के इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आपके ऊपर तनकीद करता है नॉमिनेशन के ऊपर। अब क्योंकि आपका काम जो है वो पिंडी की चापलूसी करना है और आप कहते हैं मैं आंखों में आंखें डाल दूं। मतलब लाउडर फॉर अब्दुल समाद। अब्दुल समाद लाउडर। अब्दुल समाद जी बोलिए। कोई हद होती है मुनाफिकत की। तमाम मुद्दा उठाया गया और मेरे तमाम वज़रा ने और वज़ीर आज़म ने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान के साथ जुल्म हुआ है, ईरानियों के साथ जुल्म हुआ है, फलस्तीन के साथ जुल्म हुआ है, हम मजलूम के साथ खड़े होंगे, हम लड़ेंगे। नहीं वो सब आपने कहा था, मगर उसके बाद आपने ओके कही। 1 मिनट, अब्दुल समाद is responding. We got 3 minutes on the debate. अब्दुल समाद। डॉक्टर साहब देखें, डॉक्टर साहब आप अगर ट्रंप के साथ खड़े हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इसराइल के साथ नहीं खड़ा, मैं ट्रंप के साथ खड़ा हूं। अमेरिका इस वॉर में शामिल है, अमेरिका ने बॉम्ब किया है, अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब किया है, अमेरिका इसराइल का अलाय है, अमेरिका इस वॉर में शामिल हो चुका है। आप ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा अकल पे हाथ मारें कि आप कहते हैं कि मैं ट्रंप के साथ तो खड़ा हूं, मैं नेतन्याहू के साथ नहीं खड़ा। ट्रंप हमला करे तो ठीक है, ट्रंप करे हमला ठीक है, लेकिन अगर इसराइल करेगा तो आप बोलेंगे। ये मुनाफिकत का कोई एक लेवल तो होता है। गलती करेगा उसका खमियाजा खुद भुगतेगा। आज अमेरिका में पूरे अमेरिकन सड़कों पर है। क्यों सड़कों आप सड़कों पे निकले, अमेरिकन तो निकले, आप निकले सड़कों पे, आप तो ट्रंप की तारीफें किए जा रहे हैं। आपने एक कंफ्यूजन विद इन पाकिस्तान, आपने एक लफ्ज बोला ट्रंप के खिलाफ। बोलना बहुत आसान काम है, मेरी आर्मी के खिलाफ बोलना बड़ा। आप लोग इसी का सजा भुगत रहे हैं कि आप मुल्क दुश्मन है, आप लोग मुल्क से दुश्मनी पाल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, एक इंडिविजुअल को, एक आर्मी चीफ को अगर क्रिटिसाइज किया जाए तो आर्मी को क्रिटिसिज्म कहां से आ जाता है? आपकी अकल में ये बात नहीं आती कि क्या कोई चीफ जो है वो उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता? क्या पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता? मतलब चापलूसी की ये हद है कि जी आप जनरल याया से लेके जनरल अयूब, जनरल जिया, उनके बच्चों के भी आप चापलूसी करें। के लिए बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ फलस्तीन के लिए बोलता हूँ, आप किसके लिए बोलते हो? आप पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोलते हो, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलते हो। कुछ शर्म करें, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। मैं शर्म तो चापलूसों को करनी चाहिए ना। यही नवाज शरीफ क्या बोलता था? आप तो अपने लीडर के अगेंस्ट जाते हैं। पाकिस्तान की तबाही करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप लोग कामयाब नहीं होंगे। क्यों कामयाब नहीं होंगे? कि आपके पास सोच है,
लेकिन ताकत नहीं है। आप सोचते हैं नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, पाकिस्तान के लिए सोचना शुरू कर दें। आपके और हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं, उनके लिए सोचना शुरू कर दें। अगर आप वही सोच रखेंगे जो कि हिंदुस्तान की सोच थी, लेकिन उनको दिखाना पड़ी और आपको पीढ़ी वालों को जाके कहे, आपको कभी ISI नहीं उठाया। आप ISI को बदनाम करते हैं हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ के, आपको उठाया। वो सबको बताइए, वो छोड़ दे, आपको वो छोड़ दे, वो सबको मेरी एजेंसी ने कब उठाया? पुलिस ने झूठ बोलते हैं बैठ के चैनल पर। ऐसा प्रोपेगेंडा मत किया करें, खुदारा ना किया करें। हमारी आर्मी, हमारे इदारे, हमारे लोग आप जैसे लोगों को नहीं उठाते। जो पाकिस्तान के उठाने वाले बताया नहीं करते कि वो IPs हैं या ISI हैं, सजा दी जाती है, फिर वो ऐसे चैनल पे बैठते नहीं है जैसे आप बैठे हैं। आप अगर आपके खिलाफ कोई वायलेंस करेंगे, मैं तो नहीं, ये एक मिनट, आप कह रहे हैं 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट। इरशाद अहमद खान, ये बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं आप अब्दुल समाद जी को कह रहे हैं। एक मिनट, इरशाद साहब, आप अब्दुल समाद याकूब को कह रहे हैं कि क्योंकि आप भारत के सबसे बड़े नेटवर्क पर हैं तो आप झूठ बोलिए। ये कह रहे हैं मैं बोलूंगा, मुझे जो कहूंगा। मैंने इनसे सवाल किया, क्या सवाल किया आपने? क्या सवाल किया? ओके, आस्क द क्वेश्चन। मैंने सवाल किया कि आपने कहा कि ISI ने उठाया था, इनसे पूछिए कब उठाया। अगर ISI उठाती है, टीवी पे ना बैठे होते आप किसी जगह होते, ऐसी जगह होते जैसे हमारे इदारे इनोसेंट और शरीफ लोगों को नहीं उठाते। लेकिन आप अगर इसी तरह करते रहेंगे, आपकी हरकतें यही रहेंगी। आप खुद से सजा की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पकड़ा जाए, लेकिन हमारे इदारे आप जैसे लोगों को नहीं उठाते, उनको उठाते हैं। एक मिनट, अब्दुल समाद याकूब टर्न टू रिस्पॉन्ड। मैंने एक प्रोग्राम किया, मैंने अर्नब गोस्वामी के शो में एक प्रोग्राम किया, उसके बाद मैं 25 दिन जेल गुजार के आया। आप कहते हैं मैं आपको रिकॉर्ड देता हूँ, मैं 25 दिन जेल गुजार के आया हूँ। मैं ये भी आपको पूछना चाहता हूं, अब्दुल समाद याकूब जी, कि मेरे प्रोग्राम में आने के बाद आपको 25 दिन जेल में रख दिया गया क्योंकि आप मेरे प्रोग्राम पे आए। आप इसके बारे में खुलकर बता दीजिए आज। मैं आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम में जो अजमल कसाब के हवाले से मैंने एडमिशन किया था और आपने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी अजमल कसाब के हवाले से, जब मैंने एडमिट किया था तो उसके कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद मैं 25 दिन के लिए जेल से होके आया था। और ये बड़ा मतलब आपके खिलाफ क्या केस थे? क्या व्हाट वाज द एक्यूजेशन अगेंस्ट यू? आप मेरे प्रोग्राम पे आए, आप मेरे प्रोग्राम पे आए, उसके बाद आपको जेल रखा गया, कोई केस तो बनी होगी। देखें, जो एक्यूजेशन होती है वो आपके ऊपर डायरेक्टली ये नहीं आपको एलिज किया जाता कि आप प्रोग्राम में क्यों गए। आप एक बिजनेसमैन है, आपको बिजनेस का कोई टैक्सेशन का कोई मैटर या कोई भी आपको वो कर दिया जाएगा। अगर इमरान खान 200 केसेस गुजार रहा है तो वो किस लिए गुजार रहा है कि उसने एस्टैब्लिशमेंट। क्या इन्होंने आपको कहा कि आपने ऐसा कहा था, किसी ने इनफॉर्मली आपको कहा कि आपने रिपब्लिक नेटवर्क पर आके ऐसी बात कही थी? कोई ऐसी बात हुई आपके साथ? देखिए, मुझे इस हवाले से तो मुझे बहुत बार जो है वो कन्वे किया जाता है बहुत बार। ये तो एक मतलब अगर कोई पाकिस्तान को समझता है तो उसको पता होगा कि अगर मैं एक प्रोग्राम में बैठा हूं और मैं इतना ब्लंटली बोल रहा हूं तो जाहिर है उसकी एक प्राइस भी है जो मुझे पे करनी पड़ेगी। समटाइम सॉफ्टली कन्वे किया जाएगा, समटाइम हार्डली कन्वे किया जाएगा, तो कन्वे तो किया जाएगा। हम तो ऑलरेडी विक्टिम हैं। मैं अगर आके बोलता हूं तो कोई भी अंदाजा कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब की तरह चापलूसी तो नहीं कर सकता, यही कर सकता हूं कि मैं प्रोग्राम पे आना छोड़ दूं। मैं शेरों की तरह बोलता हूं। जब आपकी हुकूमत थी जब भी मैं ऐसे ही बोलता था, मैं आज भी ऐसे ही बोलता हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए बोलता हूं। मैं सच्चा पाकिस्तानी हूं। आप कंसिस्टेंटली चापलूस हैं, आप कंसिस्टेंट। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बड़ा अफसोस है कि आपको मिला कुछ नहीं। मैं कहता हूं सबसे पहले पाकिस्तान, मैं कहता हूं जिंदाबाद, मैं कहता हूं ईरान जिंदाबाद, मैं कहता हूं खामनाई जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। इरशाद अहमद खान जी, आपने एक बात बहुत बड़ा कबूलनामा आपने किया आज मेरे प्रोग्राम पर, अ बिग कन्फेशन एंड फॉर विच आई एम ग्रेटफुल। आपने बोला कि हमने भारत ने इतना मारा और ट्रंप ने बचाए। बहुत बड़ी बात कही। PMLN के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि भारत ने बहुत मारा और ट्रंप ने बचाया। I thank you very much, ladies and gentlemen. And on the other side tonight, why I don't believe that Trump has a right to carry out regime change and why I'm fundamentally against that. When I'm back. Time for a quick breather. Arnab will be right back with the debate. आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।